forward Prime Minister Narendra Modi's Cashless India push, the Indian Railways has decided to make digital payments a norm in various railway stations. The Digital India program is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. The main motive of the Digital India is faceless, paperless and cashless transactions. To promote cashless economy, the government has come up with various discounts and schemes for the customers on digital transactions. The move of cashless transactions came after demonetization. At railway stations, people were seen using mobile phones, credit cards, debit cards and online payment wallets to make their payments easier. The commuters praised the decision and said they are using all the facilities. हर आदमी को क्रेडिट कार्ड से ही अपना परचेज करना चाहिए, चाहे टिकट हो या किसी भी दुकान पे जाते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि हमको जो पैसा ले करके चलना है वो थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है किसी किसी जगह पे। अगर मैं इस कंपेयर करूँगा कि जैसे कि आपको कहीं जाना है, कैश देना है, फिर उससे करना है, उससे उसके अकॉर्डिंग मेरे जेब में मेरे पास में मेरा कैशलेस सिस्टम है, मेरे को कहीं पर भी पेमेंट करना है, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, डायरेक्ट उसका अकाउंट में आता है, मेरा अकाउंट से कटता है। सो ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है और मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। Several Indian railway stations opt for digital payment application for all facilities including ticket purchase, smart card recharge, refunds and e-parking among others. Taking the step forward, Indian Railway Catering and Tourism Corporation has decided on a package of incentives and measures for promotion of digital and cashless economy in the country.